Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So today what are we going to do is we are going to wind up with this chapter Electricity Science class 10. So now I'm going to ask you some questions, and if you don't know the answer of these questions, then my friend, you need to watch this video. So the first question that I'm going to ask you is, what are the applications of heating effect of electric current? Then what is fuse and why do we attach it in series? And lastly, what is power and what is its commercial unit? So moving ahead, so now I'm going to give you some examples of applications or appliances that utilize the heating effect of electric current. So the first example is your bulb, then electric kettle, then toaster, and then microwave, etc. So firstly we're going to study bulb. A strong metal with very high melting point like tungsten is used to make filament of bulbs. So एक हमारा जो filament होता है bulb का, and I hope you all know that what is filament as we have studied it many times in our junior classes too. So let me tell you that filament is made up of a very strong metal with very high melting point like tungsten. So a reasoning question can also come that why tungsten is used to make filament of bulbs. So there are two reasons that you are going to write, and the first is that it has a very high melting point, second is it has high resistivity. So second is the filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support, that is glass cover. So we need to isolate filament from the atmosphere as much as possible, as much as we can, from or with the help of a glass cover. So as you all know that, as you have seen the bulb, so please see a bulb near you. So as you can see from the bulb, that the bulb has a insulating support, that is glass cover. So now I think you know that why this glass cover is present. So the reason is to keep the filament isolated from the atmosphere. Then third is the bulbs are usually filled with inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. So that अब हमारा क्या होता है, filament अब जो हमने for example हमने स्विच ऑन किया, फाइन, हमारा कोई भी स्विच है, हमने उसको स्विच ऑन किया और अब क्या होता है, जो हमारा बल्ब है, अब लेट मी टेल यू कि बल्ब कैसे काम करता है. हमने अपना स्विच ऑन किया और जो फिलामेंट होता है वो फटाफट से हीट अप होता है, और जो उसकी हीट होती है जब वो इतना ज़्यादा एकदम रेड हॉट या वाइट हॉट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तो और जो उसकी जो हीट होती है उसके बाद वो लाइट की फॉर्म में आती है. फाइन, तो इसी तरीके से हमारा बल्ब काम करता है. अब जो इसका हीटअप होना होता है, फिलामेंट जो हीटअप होता है, फाइन, उसके लिए सबसे एक दो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो इसको थर्मली आइसोलेट, मतलब इसको हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे आइसोलेट करना पड़ता है ताकि इसकी हीटिंग फास्ट हो. एंड सेकेंड इसकी वो किसी से भी रिएक्ट ना करे. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो भी गैसेस हैं उससे रिएक्ट ना करे. सो द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद inactive nitrogen and argon gases. As we know that nitrogen and argon gases are inactive because they are inert gases. To prolong the life of filament we do so. Moving ahead to the fuse wire. Now we are going to study a very new topic or a very new appliance, that is fuse wire. So what is a fuse wire? It consists of a piece of wire made up of a metal or an alloy of appropriate melting point. Fuse wire is placed in series with the device. It protects the circuit and the appliances by stopping the flow of high current. So let me explain this. अब जो हमारा fuse wire क्या होता है? It's simply just a wire. It is a piece of wire which is made up of a metal or an alloy of appropriate melting point. अब क्या होता है, जो हमारी fuse wire होती है हम उसको हमेशा सीरीज में हमारा जो सर्किट होता है उसको सीरीज में लगाते हैं. फाइन, अब फ्यूज़ वायर को हम लगाते क्यों हैं? कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सर्किट्स में बहुत ज़्यादा हाई करंट, मतलब जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा करंट. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ सर्किट नीड्स 5 एम्पियर ऑफ करंट बट sometimes it is possible that 6 एम्पियर ऑफ करंट flows from our circuit. तो क्या होगा, अब अगर हमारा 5 एम्पियर की नीड है और हमारा सर्किट जो है वो 5 एम्पियर की करंट उठा सकता है, बट अगर उसमें से 6 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए, ज़्यादा नीड से आपकी करंट फ्लो हो जाए, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है.
फर्स्ट, एंड सेकंड क्या होता है, हमारे अप्लायंसेस भी ख़राब हो जाते हैं. फाइन. तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए वी अटैच फ्यूज़ वायर इन सीरीज इन आवर सर्किट. क्यों? इसके दो रीजंस है. फाइन. सबसे पहला तो दो क्वेश्चंस बनते हैं कि हम फ्यूज़ वायर को सीरीज में क्यों अटैच करते हैं. फाइन. और फ्यूज़ वायर वर्क कैसे करता है. फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारा फ्यूज़ वायर है, अब यू कैन नोटिस कि मैंने यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन अलॉय ऑफ appropriate melting point. Why have I written appropriate melting point? So let's take the example of same circuit only, जिसकी capability क्या है करंट उठाने की 5 एम्पियर. अब हमारी जो फ्यूज़ वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 5.1 एम्पियर और 5.2 एम्पियर. और जैसे ही उसमें से 6 एम्पियर या 5.5 एम्पियर या 6.5, 6 है और हायर वैल्यू और 5.5 क्या फिर करंट फ्लो हो गया, तो क्या होगी, वो तुरंत मेल्ट हो जाएगी फ्यूज़ वायर, क्योंकि फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 5.1 एम्पियर और 5.2 एम्पियर. और गलती से भी अगर 5.2 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो फिर क्या करेगी, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग भी नहीं होगी और जो हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे. सो इन दिस वे फ्यूज़ वायर वर्क्स. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई फ्यूज़ वायर इज़ प्लेस्ड इन सीरीज. अभी मैं आपको इसका थोड़ा बाद में बताती हूँ. सो लेट्स स्टडी fourth point. If current larger than the specified value flows through the circuit, then the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होती और हमारे अप्लायंसेस भी ख़राब होने से बच जाते हैं. This I've already told you. Now I'm gonna answer your question that why do we attach fuse wire in series? So let's read. We attach fuse wire in series because if we'll attach it in parallel, then we'll get only a part of current, as current gets divided in parallel circuit. But in series, it will get the complete amount of current because current does not divides in series. Fine. Therefore, whenever high amount of current will flow through circuit, then the fuse wire will get the complete amount of current and hence it will be able to melt to save our circuit and our appliances. So I hope that you all have understood this. Moving ahead to electric power, like what is power? Fine. So what is power? Firstly, it is the rate at which electricity is consumed in an electric circuit. Fine. So now so the power has three formulas. Firstly, P equals to V into I, or P equals to I square R, or P stands for power. P equals to V square divided by R, and SI unit of power is watt. So now you will be wondering that why power has three formulas, not only one, because in some questions we are given with potential difference but not current. In some questions we are given with current but not resistance. So सब questions में क्या होता है, हमें कुछ कुछ दिया होता है, तो according to the information given in the question we use these three formulas. Okay, so now another question that comes is what is 1 watt? It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 unit. So now I have explained you this answer for it. I have explained you how to form these type of statements in my previous video. Fine. And if you haven't watched my previous videos and if you want to learn that how have I formed this statement, then please guys watch my previous videos. So now it's time to practice some of the questions related with power. So now we are gonna practice only 2 questions on power, which are now from your NCERT only. Fine. So the first question is, an electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. What is the power of bulb? So now we are given with V and I. Fine. So we are going to use the formula P equals to V into I, that is 220 into 0.5 ampere. So our answer will be 110 joule per second. Please ignore this 110 joule per second because we know that the SI unit of power is volt. So the answer is 110 volt. Then the second question is, an electric refrigerator rated 400 watt
operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour? So guys, let me tell you one thing, that what is the meaning of that question, of this question, that second question. So the meaning of the second question is कि हमारा एक रेफ्रिजरेटर है, वो कितनी पावर लेता है 400 वॉट, और इसको 8 आवर पर डे चलाया जाता है. नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज. अगर ये 1 महीना चलता है तो ये कितनी एनर्जी लेगा. अगर हमारा कॉस्ट क्या है 1 किलोवाट आवर का ₹3. Fine. I know you all know kilowatt hour, and our commercial unit of power is kilowatt hour only. And 1 kilowatt equals to 1000 volts. Watts. And for example, if our power comes out to be 9000 watt, then in kilowatt hour it will be 9 kilowatt. Fine. So 1 watt equals to how many kilowatts? 1000 watts equals to 1 kilowatt, and we all know that 1 hour equals to 3600 seconds. So now let's get started with the question. So we all know that what is the formula of energy? Formula of energy is power into time. So power is given as 400 watt and the time is given as 8 hour per day into 30. So the answer will be 96000 watt hour, and I've already told you that 1000 watt equals to 1 kilowatt hour. So our answer will be 96 kilowatt hour. So now the cost will be 96 kilowatt into 3. So the answer is rupees 288. And guys, प्लीज़ लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन. अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी तो हमें V एंड I दिया है, बट अगर इसके अंदर हमें R दिया होता और V नहीं दिया होता तो हमारे पास क्या क्या होता, A एंड I. तो उसके अंदर उसके अंदर हमारे पास क्या होता, सबसे पहले अगर हमें इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर V नहीं दिया होता, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया होता, उसकी जगह अगर हमें R दिया होता तो अभी हमारे पास क्या होता है इसके अंदर I एंड R. तो अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, I2R. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन वी यूज़ द फॉर्मूला. एंड आई होप you all have understood the things which I have taught you in this video, and if you haven't understood anything then please comment on below. I'll try to resolve each and every query of yours, and until my next video please stay tuned and bye.